Have bonsais at home? You have in the office. After listening to the story, I'm very sorry. Because let's see how we treat the bonsai. How is a bonsai tree grown? देखो सब स्टिफ लग रहे हैं मुझे. थोड़े मजे से बैठ जाओ ना. ये 3 कुर्सियां खाली क्यों है? तुम आगे आ जाओ. Come. Yes. ऊपर आते रहा. तो how is a bonsai tree grown? It is grown under a bottomless pot, right? Yeah, with a net. And with a bottomless pot, so in Japan, everybody who is an artist who grows bonsai trees is basically called as an artist. Why? Because he exactly knows which root to cut and when. So I have seen, bonsai trees sometimes 300 years old, 400 years old, and they are that tiny, 9 inches, 8 inches, 11 inches, 15 inches. So kya hua ki when we started the talk, we just thought of starting up with the bonsais. And you will be literally surprised that that artist literally sees through the root and creates that masterpiece which we decorate our homes and offices with. But what is the philosophy behind a bonsai tree? A bonsai tree grows old but doesn't grow up. Relatable? Relates us or not? Yes. Yeah. The moment we cut our roots, we disconnect from some sanskaras. We disconnect with some sort of, that nature of ours, which we are born with. We adopt something, neglect something that we are born with, and we start cutting our roots gradually. So we all grow old, but don't grow up. Aren't we doing it to ourselves? And then in this entire world, we create a projection of ourselves. So in a fact, if you see that everybody who has not outgrown, and we feel that we have been disconnected. There is someone who pulls us back to the source. See, there are two words. One is spirituality and one is religion. Mumbai में आप मिलो किसी से airport पे and you meet somebody with a dhoti kurta, wearing khadams, and you meet him at the airport and you say, Guruji, I am spiritual, not religious. Everybody is saying exactly the same line. But have you pondered ever over or just even tried to find out in the Google search that religion word comes out of a Latin word called religio. That means connecting back to your roots. वो बस फैशनेबल लगता है स्पिरिचुअल बोलना और रिलीजियस बोलना थोड़ा आउटडेटेड लगता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो दैट वर्ड सिग्निफाइज सो मच डीप मीनिंग, सो मच टू अस, बिकॉज इफ समथिंग कैन ब्रिंग यू बैक टू योर रूट्स, who we are. So how proudly can we say to ourselves, come on, no, it's not about spirituality, I am first, I'm religious. Because if anybody comes with me, comes close quarters to me, and we meet and we interact, then I will definitely make that person religious.
that quest. अच्छा, एक और बात पूछनी है मुझे. मैं अगर अभी यहाँ बैठकर आप सबके साथ एक चुटकुला सुनाऊं, कितनी बार हंस लोगे उस पर? एक बार, दो बार. तो जिंदगी भर एक ही बात को लेकर रो कैसे सकते हैं? Yeah. Every single relationship that we are into, the moment we sit together, don't you think तूने मेरे साथ 20 साल पहले ये किया था? You know how you made me feel 5 years down the line? So हमने क्या सोचा, आज हम तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं सुनाएंगे जो ऐसा लगेगा that it is coming out from somewhere else. These are stories weaved which will give you an introduction to man, illusions and reality. But one thing, I always feel one should not leave this place with a small quest. It's something that they can ask. So in Tibetan culture, ये भी मेरे को ध्यान नहीं था, कल परसों I think two or three of who came to meet me and they said, oh, I remember one story you shared. तो मैंने उनसे गाड़ी में कहा, क्या बात कर रही हो तुम? बताया मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ये आएगी. They brought it to me that I should share it with you, and it was relatable to the topic that I'm sharing. In Tibetan Buddhism, it being one of the most poorest economies in the world. So a family is always taking too much from the monastery, right? When a family is taking too much from the monastery, the Tibetan Buddhist people are very innocent people. They want to give something back to the monastery. वो चाहते हैं हम कुछ दें monastery को. जब वो ये सोचते हैं कि हम दें, so this man was about to get married. This set of people are new. We had a full house yesterday. We have a full house today. And yesterday I told everyone there's a very simple way of listening to me. You should close your ears. Though it will be helpful if they are open. But if you see what I am saying, then it will be like a small picture that can go right in front of your eyes. Just imagine this very old man in a Tibetan outfit. Every now and then when he crosses the monastery, he bows down. He bows down at the gates of monastery and always feels full of gratitude that he wants to give something back to the monastery. Whatever he is today, he feels his prayers. He feels his understanding. He feels his intellect. He feels that when he had questions, there was some place in this world where he could talk. Can you imagine when anybody among my disciples, even if they say that they are going to a counselor, I feel the purpose of spiritual education is defeated. Because भारत में सनातन धर्म में counselors की कोई जगह ही नहीं थी. There was no need. It could have been a one-to-one conversation with anybody coming close to you and saying, I have this problem, Guruji, solve this out for me. And then you never need to go. एक पुराने समय में किसी डॉक्टर के पास जाते थे, तो डॉक्टर क्या कहता था? How have you been to a doctor? हमारे ब्रज में कैसे जाते? If a daughter-in-law is going to a doctor's house, even now in Braj, अब वो डॉक्टर वो FRCS वाला नहीं है, उसने कोई डिग्रीज बाहर से नहीं ली है, लेकिन अगर वो डॉक्टर के पास if somebody goes, तो वो डॉक्टर जाते ही देखेगा उस daughter-in-law को देखेगा, सास से खटपट हो रही है. वो इतनी देर में कोने में से एक हल्की सी आंसू की धारा निकल के नाक के पास से होती हुई निकली, and then he knows this girl doesn't need medicine. She needs somebody to hear. She needs to vent out. Medicine is not required. So I think a discussion is more therapeutic. It has more value than a medicine. Imagine, Karna, if you can actually visualize what I am saying. This man goes and he goes down every now and then at the gates of the monastery,
and feels, I will return it, I will give it back to the monastery. How? अगर मेरे शादी होने के बाद पहला बेटा हुआ तो मैं मोनास्ट्री को अपना पहला बेटा दान कर दूंगा. That's how Tibetan Buddhism works. मतलब I'm telling you, everybody sitting here वो सोच रहे क्या बात कर रहे हो, बेटे का दान कर देगा. लेकिन वो सोचते हैं हम धन नहीं दे सकते, तो हम कुछ अपना दे सकते हैं. And son is my biggest possession, then I would like to give monastery my son. Chance की बात है, विवाह हुआ. He got introduced to a woman, and the first time when he met him, he said, I feel my life is indebted to a monastery. If we marry, do you agree that our firstborn child will be offered to the monastery? And the women said, okay, sure. अगर बेटा ही नहीं मानेगा तो बड़ा नहीं. That's what I'm coming to it. यही तो बैठक का मजा है. अब बताओ मेरे टॉक में सौरभ बोल लेते बीच में? नहीं बोल सकते थे. मैं यही तो चाह रहा था कि टॉक कैसी होनी चाहिए कि you have to have this interaction. अगर बेटा ही ना माने तो पता है मुझे क्या लालच हो रहा है. जो लेट कमर्स हैं उनके लिए बीच में से स्टार्ट चालू रखूं या दोबारा से चालू करूं? नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू. द स्टोरी हैज स्टार्टेड. सो क्या हुआ? दिस पर्सन गोज टू दिस वुमन हु ही इज अबाउट टू गेट मैरिड टू, एंड ही गोज एंड सेज टू हर, अगर शादी हो गई और हमारे बेटा हुआ तो first born child will actually be given to the monastery, and she agrees. शादी हो जाती है. And the moment this couple comes to their house, a very small Tibetan house, it has a very distinct flavor of smell, because Tibetan Buddhism is about, they take bath only once a year. Yeah. See, I've been 13 times to Tibet. So I exactly know about what I'm talking about. Because they have to retain the body warmth at a temperature which is like -10, -15 for most time of the year. So this woman gets into the house and there is a lot of joy. And when they start consummating their marriage, he says to his wife in his ears, this is for the monastery. This is how I want to feel full of gratitude in giving back to the monastery. Then what happens? She gets pregnant. And as you know, the religions of the East are so deep in understanding. Garbha Upanishad says that exactly on the 24th week, a child in mother's womb starts hearing. The 5th month, when everybody says to you that, oh, this is the time when the mother should start speaking to the child. So exactly about the same time, this man started talking to the child in his wife's womb, and he said one mantra. You have to carry that today with you. He says, don't look back. बेटा पीछे मुड़ के मत देखो. बेटा तो अभी तक गर्भ नहीं था, बाहर भी नहीं निकला था. He was so sure that it will be a son. And then, as the 9th month was there, and they delivered a baby boy. When the boy came out, the first thing that boy must have heard, those 4 months in the stomach, the person, the man just made that condition, that mantra, like I would say, suppose if a child is inside somebody's womb, I'll say, okay, chant Om, chant some mantras, chant Hare Rama, Hare Krishna, Maha Mantra. But this man just said, don't look back. Don't look back, son. Don't look back. And he used to get onto his shoulders. He used to pat when he was crying. He kept on saying to his son, don't look back, beta. Please don't look back. Don't look back. So everybody, all his friends used to make fun of him.
They used to say, come on, how is it possible that this little boy will understand what you are saying? He says, no, he will understand. When the time will come, he will understand that why his father conditioned him to not look back. So the monastery is about 4.5 years gone by. The child, the mother started playing. It was all fun. 2-3 more siblings were born by the time, and then they announced, asked the monastery to come. My child is ready. Please come and take it. So the monastery comes bringing a beautiful horse, trumpets, mantras, all of them coming out to their village. The entire village rejoicing, because out of this, if one boy is qualified to enter this monastery, then the whole village will be glorified. But at the side corners, everyone in the village is crying. Because a 5-year-old boy and this father, when the first time he started walking, he taught his son, said, Beta, don't look back. The first word that came out, he says, don't look back. And the son started saying, just after his father, repeating it, don't look back. Son, don't look back. Son, don't look back. And then his father started coming in. And the boy joyfully used to smile and look at his father, give him a tight hug, and used to say, don't worry, I'll not look back. And then what happened? The horse is right outside the hut. The trumpets, the sounds, the mantras, the bells. And 2 monks get inside the kutia, the small hut, and they dress up this little boy as a monk. The father is crying. You just can't control the joy and fear, the joy and this pain of losing the child forever. If ever he comes, God knows, will he able to recognize his parents or not? So imagine, sometimes we have this feeling where we are very happy, full of gratitude, and the whole body is shaking because we've been given an opportunity. He carries his child, makes him sit on the horse. ये बात बताओ, दिखाई दे रहा है कि नहीं? I'm trying to narrate the story exactly like that. The moment this little boy sat on the horse, trumpets started in more amazing, as if it's a festival in the village. Everybody was served food. Father comes gradually, holds his son's hand and says, today is the test. I never told you, but if you turn back, then they will never take you. But that's the glory of your family, of this village, of mine, that my son, I could give something back to the monastery. God knows that 5-year-old boy, what did he understood, what he didn't understand, but he was sitting on the horse. And his father gradually was just holding his hand and just saying, don't look back. What is the custom? If suppose a 5-year-old son sits in the horse and horse starts moving and he becomes crazy to look at his mother or his brother, sisters, or just behind, the monastery will refuse to take him. The child is not ready. So being a monk in Buddhism, to become a monk in Jainism is very tough. So this child sits and everybody in the village started crying. They cried to a situation that one just can't believe. The horse started moving, the monk started moving, and after a point his father had to leave the son's hand, and he just said finally, Beta, don't look back. And that 5-year-old boy, अभी तक बाप ने हाथ पकड़ा था बेटे का, बेटे ने बाप का हाथ पकड़कर दबाया और छोड़ दिया. He didn't say a word. His father was assured that I think my son will not look back. It was his son's assurance.
There was a very, very big boulder, a big small piece of mountain. It was like on the right side and a road was turning. If this boulder is crossed without looking back, it was like about 400 or 500 meters away from that hut. So father was sitting here on his knees, crying, happy, pained at the same time, and continuously saying, don't look back, don't look back, don't look back. And this boy, the moment he saw that every time his father used to sell whatever farm sales used to happen in their farms, he used to go, and every time he used to turn once from that boulder, just waving the last hand, leaving so that he'll come back after the business. So all children used to wave hands, and he knew this is the point. Entire everything around that small little boy on that horse was waiting to turn back. And then that conditioning that his father did from the womb, that voice, that sound from within said, son, don't look back. And he didn't look back. So this is an understanding. What's the catch of the story? Don't look back. You all have to live in this world, not in an illusory world. जो था ही नहीं, जो illusion ही था. You're making illusion become real. And that's why we have so many, ups and downs in this life. We have to every time explain to ourselves. But sometimes somebody feels, just not looking back is the answer. No. Then what happened? He was sitting. Just after that boulder, the monks started dancing. And monks entertained the small little child. The monks entertained the child. And as he reached the gates of the monastery, I don't know how many of you been to Tibet. So at the gates of monastery, there is a small piece of stone which has a swastik sign on it. Every monastery. So you would be wondering that why is that monastery sign at a safe distance from the main gate of the monastery is? Because when somebody is chosen, he has to sit on that rock, on it, because the gates opened and all the monks entered inside the monastery. But this little boy was made to sit on that rock and said, have patience. The gates will open. You cannot enter in this monastery when the gates are not open for you. Now just imagine how our upbringing has happened. अगर एक दरवाजा खुल जाए और भीड़ भी हो, लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, वो पी पी करके करेगा, you are overweight. But we all want to enter that gate as if that gate has opened for us. Maybe we were down the queue. We were to be in the like in the waiting list. So he sat down very casually in that attire, and all trumpets disappeared. This monastery was in the middle of the jungle, and this boy was sitting, and he could hear the lions roar. He could listen to the hissing of the snakes. He could listen to the sounds of the woods. He could listen to all that was happening, the trees, the leaves and everything. And all of a sudden, this whole thing was happening. Son, don't look back. Because that was another moment where this boy could have just gotten up and started running towards his father's village. But he just sat down. After some time, he closed his eyes. He sat there for 24 hours. There must have been somebody watching him behind the gate, but he was not aware of it. And then all of a sudden, the gates opened. The palkis had come in.
because Sogyal Rinpoches and Dalai Lamas and everybody realized that, oh, our new monk in this order has arrived, because he had the courage not to look back and also had the patience to wait for the door to open for him. Believe me, what does this story signifies? Doors will open. Patience. धैर्य. आभूषण है धैर्य. It's something that you can decorate your life with. But just imagine, we want a very fast result like this. वो टाइम तो एक सीड भी लेता है ना, जब आप उसे धरती में डालते हैं, अंधकार में डालते हैं बीज को, उसको बाहर की स्टिक को गलाने में टाइम लगता है, उसके अंदर जो जीवन है उसको फटने में टाइम लगता है, फटकर उसमें से कोपल फटकर बाहर निकलने में टाइम लगता है, और फटकर निकलने के बाद सारी चिंता सीड की नहीं है। किसी की चिंता सीड की है? नहीं। सीड को कभी चिंता ही नहीं होती, बिकॉज लाइफ इज इनसाइड, सेफ, प्रोटेक्टेड। सारी चिंता किसान को कब होती है? जब कोपल फट जाती है, जब छोटा सा एक जीवन, हरा पत्ता बाहर निकल जाता है, then he tries to save and protect. This is exactly what happens with us. So अगर आप शेल में कवर्ड रहे, आप किसी से बात नहीं कर पाए, आपने अपने इल्यूजनरी वर्ड के एक शेल को ही बीज मानकर उसी में कैद होकर रहना उचित समझा, and you had no way to vent out, no way to discuss, then what will happen? तो इसलिए बड़े आनंद की बात है। So there were two lessons from this story. One was don't look back, and the other one was have patience. So when we say it's a journey for a man, there are times when somebody loses his head. So they're a very fascinating Sufi story. And a man had made a very beautiful house. It was like a holiday home in the hills. And once in a while he used to go there, and sometimes he would stay there and say to his family that I am spending next 3 weeks in my holiday home. So in 3 weeks, every time when he used to go announcing it, he used to always return, saying 3 weeks would return in 2 weeks. Saying 1 week would return in 3 days. So every time, the time that he used to give to his family, he would reduce days. But he never managed to keep his particular date of return. He would always come sooner. If he had gone for 3 weeks, so everybody in the family would feel, oh, chalo gaya 3 hafte ke liye, jara shanti hogi, jara we'll breathe or whatever, and he'll turn up unannounced before that. So somebody asked him, what's the matter? Every time you announce and you go for this long duration and you come back early. He says, you know, I have an old women servant over there. He said that I have a very old women servant over there. She is extremely ugly. She is extremely ugly. So he said, well, what is the connection between you on a holiday at your own holiday home and then this woman who is extremely ugly? What is the connection? He says, अरे यार, first listen to the whole thing. एक बार सुन तो लो, क्या हुआ? Why do you return so early? He says, because she is ugly, that's why I have chosen her. But when I start living 2, 3, 4, 5 or a week or 2 weeks, and then all of a sudden I see that shift,
she automatically starts looking beautiful to me. She starts looking beautiful to me. That's when I realize that I have lost my mind. And that is the time I awaken. So that's my bar. I will say I'll go for 3 weeks, but because I feel I'm losing my mind, so all of us should actually have a bar somewhere in our mind, so that this is the place, this is that graph where we lose our mind. So probably the ugliest of person might start looking the most beautiful one. Then you realize, because जो शुरू में आपको, why do we get married to a very good looking girl? ये भी तो illusion है. क्यों? थी नहीं, दिखती है और ऐसी रहने वाली नहीं है. So exactly, if one understands what actually illusion is, that's a very important aspect. एक आदमी के पास एक सोने का गिलास होता था और वो उस सोने के गिलास को लेकर घूमता था. तो समझो कि वो आपके घर आया और उसने उस गोल्ड ग्लास को अपने बैग में रख रखा था. And very fine host, somebody says, like suppose Srishti says, what will you have? Is there anything that you have, just what is made best in your house, you can bring it. And the moment she used to turn, you say, 1 minute, please come here. What? He used to open the chain of his bag and take out that chamchamata glass. And he used to offer it and say, कि इसमें लाना. So Srishti used to say, or any host would say, wow, it's pure gold. Oh yes, it's pure gold. And the whole story of its getting made is being shared with everyone. Oh, do you see the diamonds at the bottom? All from Belgium. Oh, this man took so much money making it. And then everybody stopped, the whole discussion of the glass continued. And then somebody goes and says, अच्छा भाई जाओ अमरस ले आओ, लस्सी ले आओ, क्या लोगे? आज अरे शुगर बढ़ गई है, छाछ ले लेंगे, कुछ और ले लेंगे. So he used to go to every single friend's house, and this used to be his routine. One day he goes to a wrong person. He goes to his guru's ashram. गुरुजी ने पूछा क्या पाओगे? गुरुजी कुछ भी खिला दो. पर गुरुजी मेरे पास ग्लास है, उस ग्लास में देना. The moment glass came, तो गुरुजी realized ये तो ग्लास में पीता ही नहीं है. ग्लास इसको पी रहा है. गुरुजी ने रियलाइज किया ये तो ग्लास में नहीं पी रहा है, तो मेरे ग्लास इसको पी रहा है. तो उन्होंने गुरुजी ने कहा कमाल है, तू तो इतना बड़ा सेठ है, पीतल का ग्लास लेके डोल रहा है. ब्रास का ग्लास उसको बस चमका दिया. तो उस आदमी ने अपने गुरुजी से कहा कम ऑन गुरुजी, आप कभी ग्रो नहीं करोगे, यू विल नेवर ग्रो. गुरुजी ने कहा क्या बात कर रहा है, अरे ये सोने का लग रहा है. क्या बात है, फिर मेल नहीं बन रहा है. कैसा मेल नहीं बन रहा है कि कितने का ग्लास है? जो भी यार सोने का भाव हो तो समझो 1 करोड़ रुपए का होगा, 1 किलो का होगा. उस समय बड़े सस्ते में बन गया होगा. तो उसने जैसे ही बोला ये 1 किलो सोने का है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो गुरुजी ने कहा कि मेल नहीं बन रहा, बराबरी नहीं हो रही है. 1 करोड़ रुपए के ग्लास में तू 10 रुपए की नींबू की शिकंजी पी रहा है, मजा नहीं आ रहा है. अरे अगर पिए तो 1-8 लाख रुपए का तो कुछ पी भाई, कीमत भी तो निकलनी चाहिए ग्लास की. पर आपको पता है ये स्टोरी ग्लास की है ही नहीं. ये जितने यहां बैठे हैं इनकी स्टोरी है. You all have a heart. You all have a patra. You all have a soul. हमने अपने जीवन के पात्र में इस संसार की ऐसी छोटी मोटी चीजों से दिल को भर दिया है. वो ही पीकर हम
जीवन काट रहे हैं, उस पात्र में कुछ बड़ा रखने का समय आ गया, भारी भरकम रखने का समय, बराबरी का रखने का समय आ गया। बिकॉज वो जो पात्र है, वो पात्र क्या है? What path do you carry? You know one thing, in most of my talks, everybody goes blank like this. For the time being, my God, not to speak. Better to keep silent. तो पात्र कैसा? एक राजा के महल के बाहर एक there was a beggar, and beggar announced to the king, ए राजा, अगर तेरी औकात है, बोलो, कोई बोल सकता है किसी राजा को कि तेरी औकात है अगर, तो ये मेरा भिक्षा का पात्र भर दे। जब कहा कि भिक्षा का पात्र भर दे, तो भाई बड़े आश्चर्य की बात हो गई कि राजा ने कहा भिक्षा का पात्र, कि हाँ भिक्षा का पात्र। तो राजा was just passing by this corridor and he heard this challenging tone to him, if you have something, then fill up this begging bowl of mine and fill it with whatever you can. तो राजा ने कहा अपने मंत्री से, अरे जाओ सोने से, अशर्फियों से, डायमंड से जाके भर दो, so that he never goes to beg again. He will realize before challenging that he was at the gates of the king. So this big box comes out right at the gates. दरवाजे पर लाकर वो बड़ा सा सूटकेस रखा, इट हैड ज्वेल्स। तब मंत्री ने उस भिखारी से कहा, क्या पागल है, मुझसे ही बोल देता। राजा को और बोल रहा है, उकसा रहा है कि अगर तेरे में दम है, तेरे में औकात है, तो मेरा भिक्षा का पात्र भर दे। अरे ऐसे लाखों पात्र रोज भर के भेज दिए जाते हैं। पर ही वॉज नो ऑर्डिनरी बेगर। उसने वो पात्र आगे किया, और जैसे ही उसने वो पात्र आगे किया, क्या हुआ? उसके पात्र आगे करते ही उसने डाला, जो डाला था सब डिसअपियर हो गया। एवरीथिंग डिसअपियर। ही वाज कंफ्यूज्ड नाउ व्हाट टू डू। उसने दोबारा भरा और भरकर फिर उसमें डाला, लेकिन अगेन इट गॉट डिसअपियर। इट हैपेंड 10-20 टाइम्स एंड ही सेज, ये डिसअपियर क्यों हो रहा है? तो इतनी देर में राजा was returning back and said, कमाल हो गया, एक पात्र नहीं भरा गया, and 4 big suitcases are empty right now. तो all of a sudden this king comes down running to this beggar, thinking कि एक बार मुझे पता करना चाहिए ये क्या है। ये अभी तक भिक्षा का पात्र, छोटा सा कटोरा भरा नहीं गया। उस beggar के सामने बोला। The king realized his mistake. He just bowed down, folded his hands and said, मुझे बताइए ये आपका पात्र किस चीज का बना है? ये आपके हृदय का बना है, आपके हार्ट का बना है। इस हृदय में दुनिया का सब कुछ डालने के बावजूद भी ये भरता है। तो कुछ ऐसा सीख जाना चाहिए कि हम इसको भर पाए। वो हम भर किससे पा सकते हैं? जब हमारा संबंध अपने आप से हो। आप एक छोटी सी बात समझना। Aren't you trying to gather information, knowledge from every nook and corner? सबसे ज्यादा neglected क्या पड़ा है आपके अंदर? सेल्फ नॉलेज। Yes, yourself. And वो जो डिस्कनेक्ट है अपने से, खुद से, वो डिस्कनेक्ट हमें भटका रहा है। वो डिस्कनेक्ट हमें 50 दरवाजे खटखटा रहा है। And in just that process, people are making use of us. How simple it can be that you start on a journey where you start going within, asking for yourself who you are. क्योंकि आप किसी से पूछो ना, तुम कौन हो? भाई रावण के महल में, रावण के दरबार में हनुमान जी आए, और जब हनुमान जी को कैद कर लिया गया, रावण ने इकट्ठा कर दिया, तो वाल्मीकि रामायण में दिस इज ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड
रावण के दरबार में जब आबद्ध होकर बंद कर हनुमान जी आए, तो आने के बाद रावण ने उससे पूछा, कहते कपे, अबे कौन है तू? That's exactly the tone what Ravan has. आप समझना, you have heard it. You are sitting on a treasure trove of your spirituality, of your shastras, of your grantha, of everything, and still unaware. The world is coming down here and taking these things and decoding it in their own languages, and we are beggars. Then we go back and read those books like Secrets and others, thinking कि ये वाह क्या बात है, उसने बड़ी गजब की किताब लिखी है, लेकिन ये तुम्हारी संपत्ति थी, तुम्हें झांकना चाहिए था, ये तुम्हारी थी। तो उस रावण ने जोर से बोला, कहते कपे, अबे कौन है तू? बानर जैसा दिखता है, वानर। There's a big difference. Somebody says that these were the monkeys. No, they were not monkeys. There was a community in Kishkindha which looked half like human beings and half like monkeys. They were exceptionally intelligent people. There was a race which literally during that time vanished. The only differentiation was they were bilkul like human beings, but the only thing they had उनके पूंछ होती थी। उसी से केवल differentiate किया जाता था। Ram would have never taken monkeys to be his army, but these people were very special. रावण ने क्या प्रश्न किया? I don't know. I was in Surat a few days back, and somebody asked me, "You were glorifying Ravan the other day. He is to be glorified." भगवान राम जब युद्ध रावण से जीतकर रावण को मारकर he goes back to Ayodhya, somebody asks Ram कि how will you define Ravan? And you know what happened in that palace of Ram in Ayodhya? Bhagwan Ram got up. He stood. The whole दरबार got up. And भगवान राम ने कहा, नहीं आप विराजिए, मैं रावण के सम्मान में खड़ा हुआ। आपने मुझसे प्रश्न किया रावण के बारे में, उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं था, उससे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं था, उससे बड़ा किसी प्रकार किसी भी शास्त्र में प्रवेश, शस्त्रों के उपयोग में उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं था, उससे बड़ा अपने बहन अपने परिवार के प्रति समर्पित और कोई नहीं था, इससे बड़ा। He was narrating everything about Ravan in a way as if Ram was actually feeling रावण अद्भुत था, विलक्षण था। Can you imagine जैसे नवग्रह की पूजा होती है ना आपके घर में, तो क्या होता है कि to this community today it's very relevant to let people know who Ram was fighting with. It was goodness, it was dharma and adharma. The adharma was only one part, that he brought in Sita to his kingdom. But if one understands how, if I just show you the picture, कल्पना करो रावण अपने लंका में पूजा करने के लिए बैठा और नवग्रह की चौकी तैयार हुई थी, तो वो चौकी तैयार नहीं करता था, वो नवग्रहों को बोलता था आ जाओ और मेरी चौकी पे सीधे 9 जने बैठ जाओ। तो सारे के सारे 9 ग्रह उतरकर, सूर्य चंद्र बृहस्पति शुक्र सब उतरकर चौकी पे बैठ जाते थे, क्योंकि रावण उनके ऊपर अगर अक्षत डालेगा तो वो उनके प्रतीक पे नहीं डालेगा, उनके चिन्ह पे नहीं डालेगा, he will actually put it on them. That was रावण। वो रावण के दरबार में आए हुए हनुमान। You not heard it that way it should be heard. अगर हमने अपने शास्त्र को इस तरीके से ग्लोरिफाइड कर नहीं सुना, it was not a small joke to fight. Anybody could have fought with a demon. लेकिन उस समय पर भगवान ने कहा, रावण ने कहा, कहते कपे कौन है तू?
16 योजन लंबे समुद्र को लांघ कर आ गया। बंदर जैसा लगता है, लेकिन तुझे देखता हूं तो शुद्धता प्रतीक होती है, इनोसेंस प्रतीक होती है, शुद्धता दिखती है। तेरे को देखकर मन में भाव बड़ा आनंददायक प्रतीत होता है, लेकिन तूने मेरी पूरी लंका में तहस नहस कर दिया। कौन है तू? Imagine Ravan is asking a question and Hanuman is standing there, and he feels that his guru Surya has not taught him who he is. तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे उसमें तुम्हें गलत शिक्षा दी. That is why it is so relevant to talk on man, illusions and reality, because your guru has not taught you who you are. तुम कौन हो ये किसने सिखाया? तुम्हारा सरनेम तुम हो, तुम कहां काम करते हो तुम हो. तुम एक बात समझना, if you meet someone for the first time, what should be removed in any EO or YPO get together? See, I've been traveling to South India, to Chennai, to Hyderabad for these YPO and EO meets, so I always tell them one thing, कि क्या चीज, क्योंकि आपका एक YPO प्रोटोकॉल है, which I understand, which they always share with me, or this was not discussed because this was YPO protocol, but I'll share something with you. What should not be discussed? How do you meet? First time somebody comes across and sits across to you, and the first shake hand, and the first question is, आप क्या काम करते हैं? So that first question is judgment. That first question is weighing where do you stand? Should I be friends with you or not? Do you match my standard or not? Right? ये प्रश्न कभी उठना ही नहीं चाहिए. ये प्रोटोकॉल होना चाहिए YPO. ये आपके बड़े बड़े क्लब्स का. क्योंकि उसने क्या पूछा, भाई कहां से आया? And Hanuman was speechless. He felt my guru taught me everything, Vedas, Shastras, Brahma Sutras, every kind of education मेरे गुरु ने मुझे दे दी, लेकिन मेरे गुरु ने ये नहीं बताया मैं कौन हूं. यानी पूरी एजुकेशन सिस्टम रिवर्स हो गई है. अब सबसे पहले बताया जा रहा है तू कौन है बेटा, दुनिया को बताने के लिए समझ ले. So he goes speechless and he goes inside, but he was holding Sita ji's mudrika in his hand and he looks at it. Maiya, अगर आज मैं निरुत्तर हो गया, if I am unable to answer this Ravan, then राम का अपयश हो जाएगा. मुझे बताओ मैं इस रावण को क्या उत्तर दूं कि मैं कौन हूं. And all of a sudden, answers comes to his mind, and he says, "Dasoham Raghavendrasya." मैं भगवान राम का दास हूँ. उसने जैसे ही बोला मैं भगवान राम का दास हूँ, रावण ने कहा क्या है तुझे? मैंने सोचा कहीं का राजा, कहीं का शासक, कहीं का नियंता, कहीं का कुछ होगा. अरे तू नौकर निकला. उसके बाद जरूरत नहीं थी सीता मैया के शरणागत होने की. उसने छूटते ही क्या कहा, रावण एक मिनट अपनी ओर देख, तू काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का, असूया का, इन सब का दास है और मैं इन सब का स्वामी हूं, क्योंकि मैं श्री राम का दास हूं. You have to know who you are. This exercise of man, illusions and reality is actually a reality check. कारण क्या होता है? If I start pinpointing situations, somebody might feel, oh, he was in his lecture getting too personal. It's not about being personal. It's about igniting a quest within, that you start asking, identify the illusions. And just see, gradually एक कर सारे illusions जो हैं वो आपको रियलिटी की तरफ लेकर चले जाएंगे.
so important. So one actually has to feel connected to it. There was a very beautiful story, though I have prepared so much yesterday since that it happened, and ये लोग मेरे से ऐसे ही डरा रहे थे मुझे कि we were thinking how will we put it. So मैंने क्या सोचा कि मैं आराम से एक आध घंटा I'll talk about it, and then I would love to have questions. Yeah. लेकिन एक छोटी सी बात समझिए, क्या हुआ कि एक बार की बात है, कालिदास एक विलेज से निकल रहे थे, और जब वो एक गांव से निकल कर जा रहे थे, ये भी हमारी स्टोरी, मैं कालिदास को ऐसी नाम ले रहा हूँ, and you know every story when it is relatable, I'm telling you, you don't have to carry the entire conversation with you, but if you carry the essence of the story, it's been more than enough. कालिदास was crossing a village, और बहुत कस के उनको प्यास लगी, और जब उनको प्यास लगी तो उनको एकदम मन में करा कि भाई let me stop at a well. The moment he stopped at a well, there was this very गांव की एक गुजरी, one woman was taking out water from the well. तो जैसे जाते हैं पुराने समय में, this person reaches out and says, मैया बहुत प्यास लगी है, पानी पिलाओगी? ठीक है, पानी पिलाओगी? तो वो औरत कहती है, अच्छा पहले अपना परिचय दो, कौन हो तुम? तो उसने सोचा, अब कालिदास तो सभी जानते हैं, he was a great poet, he was a Sanskrit scholar. उन्होंने अपने मन में क्या सोचा, अरे इस गंवार औरत को बताऊं कि मैं कौन? समझना, जैसे हम जजमेंटल होते हैं तो हम आपस में मिलते हुए क्या कहते हैं, कोई कहे ओहो आप कैसे हैं? ये पता है बहुत सारी कब सिचुएशन होती है, आपसे कोई कहे ठीक है आई विल कनेक्ट विद यू, गिव मी योर फोन नंबर, I will. You cannot let that person come so close to you. You have the number. So कालिदास ने उस औरत से पूछा, तो उन्होंने अपने मन में, and we are entering into the mind of कालिदास, and कालिदास ने कहा, गंवार औरत है, गांव में अपने घर पर जाकर घड़े भर के लेकर जाएगी, इसको अगर मैं गलती से बोल दूं कि मैं कालिदास हूं, तू जानती भी है मैं कालिदास हूं, तो जैसे ही मैं बोलूंगा कि मैं कालिदास हूं, इसके समझ में नहीं आएगा। तो कालिदास ने अपना परिचय दिया कि मैं एक ट्रैवलर हूं, मैं एक ट्रैवलर हूं। छूटते वो यूं ही रस्सी खींच रही थी, तो उसने छूटते ही कहा, इस दुनिया में केवल दो ही ट्रैवलर्स हैं, एक सूर्य और एक चंद्र, और कोई ट्रैवलर ही नहीं है। तो छूटते ही इस बात का उत्तर लेकर कालिदास के मन में किया, है ये बात तो सही कह रही है, मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं रास्ते में चलने वाला पथिक हूं, भाई पथिक तो दुनिया में केवल दो ही है, सूर्य और चंद्र। तो उसने कहा फिर भी बताओ पानी पीना है, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा बड़े सोच विचार कर, क्योंकि कभी कभी आप किसी से उत्तर एक्सपेक्ट नहीं करते, पूछिए किसी से। तो उसने छूटते ही कहा, आई एम अ गेस्ट। कालिदास ने कहा कि मैं तो गेस्ट हूं। अरे क्या बात कर रहा है, गेस्ट भी दुनिया में दो ही होते, यूथ और वेल्थ, केवल दो ही गेस्ट है और कोई गेस्ट नहीं है। तो कालिदास ने खोपड़ी पकड़ ली, उसने कहा यार ये तो मेरे से भी बड़ी निकली, मैं तो सोच रहा था कि इसको पाठ पढ़ाऊंगा, इसने छूटते ही मुझसे कह दिया। तो उसने कहा कि पानी पीना है कि नहीं पीना है, नहीं तो मैं जाऊं अपने घर। तो कौन हो तुम, परिचय दो अपना, मैं पानी पिलाऊंगी तुम्हें। तो उन्होंने कहा मैं बहुत सहनशील आदमी हूं, आई एम अ वेरी टॉलरेंट पर्सन,
तो छूटते ही उसने कहा दुनिया में दो ही टॉलरेंट हैं, एक माँ, दो ही केवल टॉलरेंट हैं। कौन? एक पृथ्वी और एक पेड़। पृथ्वी पर तुम हल चलाओ, पृथ्वी को तुम खोदो, और पेड़ पर तुम पत्थर मारो, तो दोनों स्थिति में वो तुमसे देते। उनसे ज्यादा टॉलरेंट इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अब ही वाज आउटस्मार्टेड। जहां तुम ज्यादा स्मार्ट दिखाओगे तो कोई भी आदमी तुम्हें आउटस्मार्ट तो कर ही देगा। तो उसे छूटते ही कहा कि अब मुंह सूख रहा था, और जहां पर आपको कोई आउटस्मार्ट कर दे तो और आप देखते हैं कि मुंह सूख ही जाता है। तो उन्होंने अंदर से परेशान होकर बोला कि मैया मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं, आई एम अ वेरी स्टबर्न पर्सन। तो उसने कहा नहीं भाई, तू जिद्दी भी नहीं है, दुनिया में दो ही जिद्दी हैं। कौन है? आपके बाल और आपके नाखून। इनसे ज्यादा कुछ जिद्दी कोई नहीं है। इनको रोज काटो और ये रोज पड़ जाओगे, ठीक है? इनसे ज्यादा जिद्दी कोई नहीं है। आई एम अ वेरी स्टबर्न पर्सन। इसे नो, नाक के नाखून और माथे के केश से ज्यादा इस जगत में जिद्दी कोई नहीं है। और कालिदास अपना पेशेंस लॉस्ट कर चुके थे, खो चुके थे, और आउटस्मार्टेड बाय अ विलेज वुमन, outsmarted by a very simple woman who was just pulling water। वो ध्यान भी नहीं दे रही थी, उसने दिमाग भी नहीं लगाया। कालिदास ने सारा दिमाग लगाया। कालिदास ने सोचा इसको तो कैसे बताऊं मैं कालिदास हूं। और देखो जहां हम इस मैं को बड़ा करते हैं, सामने कोई है जो आपके मैं को बहुत छोटा करते है। ये मैं जो है ये इल्यूशन है। जैसे ही उस मैं से परिचय हुआ तो कालिदास ने कहा मैया क्या कहते हैं आप सब इसके बाद, क्या कह सकते थे? प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था, तो उन्होंने कहा खड़ा नहीं हो पाऊंगा। सोचा अब क्या कहूं, उन्होंने सरेंडर कर कर कहा भैया मैं बेवकूफ हूं। आप समझना, जो व्यक्ति फुल ऑफ ईगो होता है वो लास्ट ट्रिक क्या करता है, वो ये कहता है चल तू जीत ले। तेरे जीतने में भी अंदर सुकून क्या मिलता है कि मैंने तुझे जीतने दिया, तू नहीं जीता है, आई लेट यू विन, ठीक है ना? तो जैसे ही बोला तू जीत ले, तो छूटते ही उन्होंने बोला अरे तू बेवकूफ भी नहीं है। दुनिया में दो ही प्रकार के बेवकूफ होते हैं। एक वो लीडर जिसको लीड करना नहीं आता और लीडर की पोजीशन पे बैठ जाए, और एक वो उससे बड़ा बेवकूफ है जो उस लीडर को फॉलो करता है, ठीक है? तो एट बाय दिस टाइम सारी हेकड़ी और ईगो निकल चुकी थी, और घुटने के बल आकर he felt I should do pranam to this woman because she has taught me something। पर देखो रेवोल्यूशन किसमें, who's a saint? Who's a saint? If you find some place where something shifts, someone comes and shifts something within you, then exactly do the performance like Kalidas. He went onto his knees and he did Dandavat. The moment he Dandavat, as he got up, it was Ma Saraswati. She wanted to test Kalidas. She says, whatever you have is mine. Whatever you are preaching is mine. तो ये किसी व्यक्ति को देखकर ये जजमेंट करने की क्या जरूरत थी कि मैं इतना ज्ञानी हूं, इस गंवार औरत को बताऊंगा मैं कौन हूं तो वो क्या कर लेगी, उसे क्या समझ में आएगा? अरे तुम्हें पता नहीं है यहां छिपे हुए स्वरूप में कौन कौन बैठे। अगर एक बार उनसे परिचय हो जाए तब उसके बाद उसने कहा कि कालिदास इस समय पर केवल एक काम करना है। ये जो मैन इल्यूशंस और रियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर एक ही चीज जीवित है, एक ही चीज सच है। तुम समझना, अगर ये शरीर को तुमने माना तो ये इल्यूशन है, ये था ही नहीं।
ये दिखता है, ये होने नहीं वाला है, यहां से हमने चालू किया था। लेकिन ये शरीर बैठकर कुछ सुन रहा है, सुनकर ये समझ रहा है, समझकर ये देख रहा है, समझकर देखकर ये अपने आप में एनालाइज कर रहा है, मैं क्या करता हूं, मैं उस करने वाले स्वरूप को, अपने एक्ट को लेकर आता हूं। इन सबके बीच में जो रियलिस्टिक है वो विटनेस है, जो देख पा रहा है, समझ पा रहा है, अपनी गलती भी एहसास कर पा रहा है और उसको संभालने को तैयार भी है। दैट्स द रियल पर्सन, दैट इज यू एंड दैट इज द विटनेस। What has to be done? उस विटनेस को जगाना है। Yes. किससे मुलाकात होगी? अपने से होगी। मेरे पास। और आप समझना, ये जो बैठक है ना, we all actually, I have been very thankful to, अब तो बुला लो उसको।